जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। अप्रैल के करंट अफेयर्स आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम में, सीडीएस में और एनडीए में। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन है। अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स आज हम खत्म करेंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस न्यूज। नंबर 1 इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। क्लियर है जी। ये इंडिया और यूएस के बीच में बायलेटरल ट्राई सर्विसेज HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। और ये हुई कहाँ पर है? इंडिया ईस्टर्न सी बोर्ड, हार्बर फेज इन विशाखापट्टनम, देन काकीनाडा। क्लियर है जी। इंक्लूडेड वेरियस प्री सेल कॉन्फ्रेंसेज, दीज ऑल थिंग्स। इसमें इंडियन साइड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय INS जलाश्वा, घरियाल, Mumbai and Shakti with Indian Army troops, integral helicopters, long range maritime patrol, right? C-30 helicopters and all. अपने को सिर्फ इतना याद रहे, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव है क्या? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। It's an indigenously developed precision guided munition by DRDO, designed for high impact strikes with extended range, enhanced targeting accuracy. 1000 kg class glide bomb। बार बार ये ग्लाइड बॉम्ब है जी। क्लियर है। डेवलप्ड इंडिजिनसली, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO फ्रॉम अ सुखोई S-30 MK fighter jet with a range close to 100 kilometers, with pinpoint accuracy and an inertial navigation system. So do remember this long range glide bomb, जिसका नाम क्या जी? गौरव। इंपॉर्टेंट है, पार्क करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। Indian Army's air defense warriors from the White Tiger Division have proven their operational readiness and technical expertise during a live missile firing exercise, firing of 9K33 OSAC AK missile system. This 9K33 ये ओजा AK है क्या? रशियन बिल्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। डिजाइन टू शूट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट, helicopters and drones flying at low altitudes. It's a short range mobile missile system, can move quickly to different locations, protect important areas from air attacks. Built by Soviet Union in 1960s, SA-8 Gecko is the NATO reporting name. मार्क कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जी। क्लियर है। 9K3 ओसा ए के मिसाइल सिस्टम। INS Sunaina, very very important, designated as Indian Ocean ship, Sagar ship, entered the port of Dar es Salaam, Tanzania. The ship had sailed from Karwad, Karnataka से 44 naval personnel from 9 friendly foreign nations of the Indian Ocean region. Right, Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Sri Lanka, and South Africa. In the harbor phase of exercise Akimya, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ये भी याद रहेगा जी। इंडियन ओशियन शिप, सागर शिप, इसको बनाया गया INS सुनैना को, जो कि अभी दर इस्लाम, ये भी पूछ सकता है ये पोर्ट कहाँ पर है? तंजानिया में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं जी INS वर्षा, अ डेडिकेटेड नेवल बेस फॉर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स near Rambili in Andhra Pradesh by 2026. India is preparing to operationalize, will specifically serve as dedicated base for both nuclear powered ballistic missile submarines and nuclear powered attack submarines. This will feature underground pens and tunnels to house nuclear submarines. ये भाई याद रखना है, INS वर्षा। क्लियर है। नेवल बेस फॉर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में 2026 तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो जो नाम आ रहे हैं ये पूछ लेता है जहां पर भी हो। नेक्स्ट है जी BM-04 मिसाइल,
defense exhibition in Hyderabad is a short range ballistic missile. Very important BM. Developed by DRDO, टू स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल जिसकी रेंज है 400 से लेके 1500 किलोमीटर. कन्वेंशनल वॉरहेड कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग सिक्स व्हील ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर. It also features a hypersonic glide body maneuverability during its flight. Fly at hypersonic speed, which is match number more than 5. क्लियर है जी. PM-04 भी याद रखना आपने. ये अभी अभी अनवील की गई है मिसाइल एट डिफेंस एग्जीबिशन. कहाँ पर हुई? हैदराबाद में. और ये है क्या जी? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. आइए जरा आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज आक्रमण. ये लार्ज स्केल वॉर गेम है इन द सेंट्रल सेक्टर, फोकसिंग ऑन एनहांसिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज across both mountainous and ground-based terrains. याद रहेगा जी. ये किसकी है? इंडियन एयर फोर्स की लार्ज स्केल वॉर गेम है. मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी. बेस्ट रहेगा अगर आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाएं ताकि आपको याद भी हो जाए. इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये सारी चीजें आप नहीं नोट करेंगे. क्लियर है जी. इन द सेंट्रल सेक्टर इन्वॉल्विंग अ मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट लेड बाय राफेल एंड सुकोई. नेक्स्ट एक्सरसाइज पालीकतन 2025. ये नई एक्सरसाइज है, न्यूज में इंपॉर्टेंट है. ये क्या चीज है जी? फिलीपींस ने ये होस्ट की है. लार्जेस्ट बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन फिलीपींस एंड यूएस, नॉट इंडिया, राइट. बाली कतन aims to enhance interoperability, regional security, and the exercise covers all five domains: land, air, sea, space, and the cyber. क्लियर है. ये पांच डोमेन्स है आज के जमाने में डिफेंस में. पांचों में फुल बैटल टेस्ट सिमुलेटेड ऑन एंड ग्राउंड एट लिजोन एंड पलामान. नेक्स्ट है जी MK2A, इंडियाज फर्स्ट हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ए पेपर. हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस. चेस इन हैदराबाद ने बनाया ये. This system uses a 30 kilowatt laser beam to neutralize threats like fixed wing drones and drone swarms, designed for rapid engagement, precision, and lethality within seconds. To remember this MK2A, which is India's high powered laser based directed energy weapon system. Next is exercise Desert Eagle Flag. Desert Flag 10. It's a multinational air combat exercise which is hosted by UAE Air Defense, and it was held at Al Dhafra Air Base to enhance interoperability, operational synergy, and mutual understanding. India's Air Force deployed MiG 29 and Jaguar aircraft. It involves air forces from various countries: Australia, Bahrain, France, Germany, Qatar, Saudi Arabia, and all. नेक्स्ट एक्सरसाइज दुस्तलिक. ये पहले भी न्यूज में रहती है, तकरीबन आई रहती है, आपके एफकैट में भी काम आ सकती है. इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज which was held in Pune, that the name is Dustlik, which involves a contingent of 60 personnel, a battalion of Jat regiment and Indian Air Force. Clear है जी. It is an annual training event conducted alternatively in India and Uzbekistan. Dustlik इस बार कहाँ पे हुई है जी? पुणे में. To counter terrorism operations in a simulated urban or this thing, to enhance interoperability and strengthen the bilateral defense system. नेक्स्ट आ गया जी INS सूरत successfully test fired a medium range surface to air missile. क्लियर है जी. Air defense missile system in the Arabian Sea. The MRSAM has a range of 70 to 100 kilometers, jointly developed by India and Israel. Clearly, medium range surface to air missile. The test, which was a precision cooperative engagement of a sea skimming target.
नेक्स्ट इज इनियोकोस एक्सरसाइज। ये क्या इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बिगिनिंग इन ग्रीस, राइट। इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करे, 12 डे एक्सरसाइज है, hosted by Greece Hellenic Air Force, will take place in Andaravida Air Base in historical region of Alice। इंडिया की जो सुकोई MKI है और कॉम्बैट इनेबलिंग IL-72 C-17 is a biennial exercise। क्लियर है जी। ये हुए हमारे डिफेंस के जो न्यूज में थे। एक्सरसाइजेस देखनी है, ये वेपन्स देखने हैं जो जो MK2 है। मेरे दोस्त आप इसको भी फर्दर सेग्रीगेट करके लिख के याद करना शुरू करेंगे साथ के साथ। BM-04 क्या जी, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। और डिफेंस से अगर आपको पता 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। अब हम बात करने थे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। ये ज्यादातर CDS के और CFF के पेपर में रिपोर्ट इंडेक्सेस पूछ लेता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अब बेसलाइन रिपोर्ट फॉर 5 फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 है मिस्टर पंचायती राज का, टू मेजर प्रोग्रेस ऑफ ओवर 2.5 lakh ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया। इट्स फोकस इज टुवर्ड्स लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एम्पावरिंग ग्रास रूट गवर्नेंस, राइट। ग्रास रूट एम्पावरमेंट करनी है, इन चीजों में फोकस करना। क्लियर है। और इसमें फोकस है लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी फ्री इनहांस लाइवलीहुड, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सच थिंग्स आते हैं। क्लियर है जी। ये कर कौन रहा, ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्लियर है। एडवांसमेंट इंडेक्स फोकस है SDGs पर ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर। 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स, 331 मैंडेटरी एंड 104 ऑप्शनल। ये सबसे बेस्ट इधर दिए हो। थीम कौन कौन से कल को पेपर में पूछ सकता, कौन कौन से थीम है, कौन कौन से नहीं। 9 थीम है, जस्ट रिमेंबर दीज। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट was published by World Bank, highlights that nearly 2 billion people in low and middle income countries lack adequate social protection. 1.6 billion receiving no benefits and 400 million receiving insufficient support. तो ये है जी स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। किसने रिलीज किया? वर्ल्ड बैंक ने। एवरीबडी इज क्लियर। वर्ल्ड बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में, और IMF के भी यहीं पर है। दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। नेक्स्ट है जी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ UNCTAD टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। इंडिया रैंक्स 36th out of 170 countries, improvement from 48। This index evaluates countries based on their readiness to adopt, utilize frontier technologies which are rapidly developing like AI, robotics, gene editing. India has been ranked 10th globally in private AI investments. Next is very, very important Mangrove Risk Index 2025। इसको डेवलप किया स्विट्जरलैंड और US ने। Clearly, the index evaluates the impact of climate threats such as raising sea level, increasing tropical cyclones on mangrove ecosystem globally। याद रखिएगा जी। Mangrove vulnerability under 3 future scenarios like shared socioeconomic pathways range from moderate emissions and then very high emissions। The index indicates that over 56% of the world's mangroves could face high or severe risk by 2100। मैनग्रूव्स आपको पता है पूरी दुनिया में, भारत में सुंदरबंस में सबसे ज्यादा है जी। क्लियर है जी। और इससे आपको पता क्या चलेगा जी, ये जो जॉइंटली डेवलप की गई है रिपोर्ट, इसमें बताया गया क्लाइमेट थ्रेट
राइजिंग सी लेवल, इंक्रीजिंग साइक्लोन्स ऑन मैनग्रोव, वो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं ये जो है सी लेवल और ये साइक्लोन्स। चले आगे जी, चलिए फिर डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, ये क्या जी, CSIRT एंड फिन एंड सीसा aims at strengthening cyber security in the banking, financial services and insurance। BFSI सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ये चीज पे फोकस किया जा रहा है। चलिए आगे, evolving cyber risk and this thing. As a report, BFSI sector witnessed a surge in the cyber attacks. Next है जी, world economy is entering a recessionary phase. Trade and Development Foresight's report released by UNCTAD to remain the fastest growing major economy by 6.5% growth rate in 2025. Global growth is expected to decline by 2.3%. Next is the Times Higher Education University Rankings IISc. Bangalore is the highest ranked university, that is at the 38th position, from which has dropped from 32nd position. Like China's Tsinghua University and Peking University retain top two positions. National University of Singapore ranks third in the overall ranking. तो दोस्त ये है अपना। अब हम समझेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स और पोर्टल्स पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आक्षवी डिजिटल वॉलेट, इट स्टैंड्स आपदा क्षति विवरण। इट इज अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म created by seeds. It allows communities to self-report and their losses in any disaster wherein such household is given an e-disaster wallet for self-reporting their economic and non-economic losses। याद रखिएगा जी, आक्षी डिजिटल वॉलेट। चलिए, क्रिएट किसने किया, सीड्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी aims to strengthen the electronics manufacturing ecosystem by attracting investments and enhancing domestic capabilities. India is a global electronics manufacturing hub. Zoovin platform, a digital platform created by government at the real-time monitoring of anti-rabies vaccines and anti-snake venom stocks to enhance healthcare delivery across the country, reduce fatality rates associated with rabies and snake bite fatalities. The portal has been developed by National Center for Disease Control. पालना स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल क्रेडिट स्कीम थी जो, उसका नाम रख दिया गया पालना स्कीम, अंडर द सब स्कीम समर्थ्या मिशन शक्ति under Ministry of Women and Child Development. Palna scheme is to provide quality crèche facilities in a safe and secure environment for children from 6 months to 6 years. Nutritional support, health, cognitive development of the children, growth, monitoring, monetization. Provided to all mothers, irrespective of their employment status, or ensures early childhood care, nutritional support, early child education for children। तो याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है पालना स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इट्स अ पार्ट ऑफ समर्थ्या स्कीम मिशन शक्ति। निवेशक दीदी इनिशिएटिव, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, Indian postal payments banks have signed a memorandum of agreement to launch phase 2। It's a women-led financial literacy initiative focused on empowering rural populations through community-based financial education, aims to build financial awareness and responsible money management habits।
इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का ये इनिशिएटिव है। क्लियर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अ नेशनल लेवल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन फ्यूचर रेडी स्किलिंग एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स डेवलपमेंट। क्लियर, स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ही ये प्रोग्राम है विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम to close the skill gaps through the inclusive upskilling, reskilling, and aligning education with industry needs. HELD initiative, very important, healthy liver education and alcohol associated liver disease prevention. First of its kind, nationwide initiative. Tackling liver disease in India on the occasion of World Liver Day, April 19. Right, multi-sectoral program combining public education, early screening, and psychological medical treatment of alcohol use. Next is very important, mission innovation, government funded initiative, 720 crore over 2025 and 2026, aimed at boosting India's energy security by mapping oil and deposits in sedimentary basins of Ganga, Punjab, Rajasthan, Sashastra, line, seismic surveys, particularly 2D and 3D, to enhance country's energy self-sufficiency by encouraging exploration and production activities. Very, very important, innovation program, मिशन अन्वेषण, मार्क करिएगा, पेपर में आ सकता हूँ। चले आगे, नेशनल जीरो, याद रखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन launched by Ministry of Health and Family Welfare on World Immunization Week. मिजल्स एंड रूबेला इन इंडिया को खत्म करना है 2026 तक, 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज। ये वायरल डिसीज है, लीड टू सीरियस इलनेस, लाइफ लॉन्ग कंपाइल कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन डेथ। नेक्स्ट है एआई किरण इनिशिएटिव, नेशनल मूवमेंट लॉन्च टू प्रमोट वुमेन्स लीडरशिप इन एआई in India. India's AI is projected to breach $17 billion by 2027. The point here is it is co-led by Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, Varix, powered by credentialing platform Inc. Women. Gender disparity in this rapidly evolving field को खत्म करने के लिए एआई किरण, महासागर इनिशिएटिव, जिसकी फुल फॉर्म है म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. This initiative is an extension of Sagar, which is with a shift of focus from just maritime security to economic and geopolitical concerns, and to consolidate India's position as a preferred security partner in the Indian Ocean region. क्लियर है जी. महासागर जो पहले सागर था वो 2015 में सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में, अब ग्लोबल साउथ, इंडिया, पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब आ रहे हैं उसमें. फोकस क्या इसमें, ट्रेड ड्रिवन है. पहला गया था सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टाइज, ब्लू इकोनॉमी, रीजनल स्टेबिलिटी, बट हियर इज टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्लोबल सिक्योरिटी. क्लियर है, पहले सिर्फ इंडियन ओशन रीजन के मेंबर्स थे, अभी अफ्रीका भी आ गए, एशियान भी आ गए, लेटिन अमेरिका भी आ गया, पैसिफिक भी आ गए. तो IOR या बिम्स्टेक, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड G20 ब्रिक्स, ये डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी. आई होप एवरीबडी इज क्लियर, महासागर वाले पॉइंट्स. और ये अब इसमें बाकी रीजन्स भी आ गए. यशराज भारती सम्मान,
क्लियर है जी। थर्ड एडिशन ऑफ यशराज भारती सम्मान, इसमें दिया किसको, सीपी राधाकृष्णन, हैज बीन कन्फर्ड विद यशराज भारती अवार्ड। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने और सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म ने ये फोकस किया। अभी अभी श्रीलंका ने मित्र भूषण अवार्ड, पूछ सकता है मित्र भूषण अवार्ड है किसने दिया, किस कंट्री का, श्रीलंका का। किसको दिया गया जी, मोदी जी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ऑनर bestowed on foreign leaders. This is the first time that an Indian leader is receiving this award. Very very important, याद रखिएगा, मित्र विभूषण अवार्ड। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल, ये किसको दिया, 5 military personnel conferred medal by Chief of Defence Staff for their outstanding contribution in military reconnaissance, exploration and adventure for 2023 and 2024, includes mountaineering, sailing and ultra running. It is an open to all ranks of the Indian Army, Navy, Air Force, Territorial Army, Reserve Forces, Rashtriya Military and this. Wing Commander D. Panda, Art Electrical Artificer Rahul Kumar, Electric Pandey, then Electric Aircraft Artificer Ram Ratan Jat, सर्जन झूमर राम पूनिया। तो ये नाम है जी जिनको मिले ये अवार्ड्स। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल physics was awarded to over 13,000 researchers from 4 experimental collaborations. इस पे भी जरूर चेक करेंगे। Standard model of particle physics and exploring potential physics beyond its using data. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि माद्रिद में दिए गए हैं, ऑस्कर कहा जाता है स्पोर्ट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है जी, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेडो डुप्लेंटिस और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। स्पोर्ट्समैन विद अ डिसेबिलिटी जियांग युआन। ये कुछ नहीं याद रखना, बस ये पक्का याद रखेंगे। पर मेरे को तो ये भी नहीं पता ये गेम कौन सी खेलते हैं, मोंडो डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स। चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, मोंडो डुप्लांटिस कौन सी गेम खेलते हैं और सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट, उगाड़ी अवार्ड, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस एंड renowned historian and archaeologist Maina Swami will be honored with the prestigious Ugadi Award for his outstanding contribution to historical research and social service. This award includes Kala Ratna Hamsa Medal, National Youth Award, Akash Shroff, the founder of Yuva Spark National Youth Award for his efforts in transforming early childhood education in India. Mansukh Mandaviya Award to Akash during an event in Parliament House. ये भी याद रखिए जी, युवा स्पार्क रिसीव द नेशनल यूथ अवार्ड, पक्का याद रखना जी, आकाश श्रॉफ। मास्टर ह्यूमर अवार्ड, आमिर खान was awarded at Macau International Comedy Festival in China. Master Humor Award. Gold Mercury Award for Peace and Sustainability. Dalai Lama was awarded for his contribution to peace, non-violence, and environmental stewardship. Fred Darrington Sandmaster Award. सुदर्शन पटनायक काफी पुराने फेमस रहे हैं सैंड आर्टिस्ट,
first Indian to receive the prestigious Fred Darrington Sandmaster Award. The award was presented during the Sand World 2025 International Sand Forum. To mark the occasion, created 10 feet high sculpture of Lord Ganesh carrying the message World Peace. Padam Shri awardee from Odisha has participated in 65 international scene sand art festivals and championships. याद रखें फ्रेड डरिंगटन. Dr. D. Nageshwar Reddy, chairman of AIG Hospitals, received the Legends of Endoscopy Award by Japanese gastroenterologist. Next, Payal Kapadia, a Mumbai-based filmmaker, has been awarded Officier Dense Ordre des Purpose by French government for her film All We Imagine as Light, which won the Grand Prix at 77th Games. Very, very important. क्लियरली ऑल वी इमेजिन एज लाइट उनकी किताब उनकी फिल्म है जिसके लिए उनको मिला ये प्राइज. क्लियर है, फ्रांस का सबसे ऊंचा प्राइज, प्रेस्टिजियस प्राइज. ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर. Priyanka Chopra will be honored at the fourth annual Gold House Gala. Besides John M. Chu, Megan's three stallion, Angley will be felicitated as per the variety. The Gold Gala will be take place in May 10 at the Music Center in downtown Los Angeles. Late Dinanath Mangeshkar Award. Kumar Birla was honored with late Dinanath Mangeshkar Award for his leadership and contribution to India's economic growth. National Maritime Varuna Award. Rajesh Unni, founder of Synergy Marine Group, has been honored with National Maritime Varuna Award, highest individual recognition in maritime sector. Civil Services Day Poshan Tracker application of Ministry of Women and Child Development received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration. Gurudev Kalicharan Brahma Award. Achutya Samanta, founder of KIT and KISS, was honored with Gurudev Kalicharan Brahma Award in Kokrajhar, Assam. Were called Dalit Literary Award. P. Siva Company, a renowned writer, former IAS officer, social activist, has been awarded the Varkol Dalit Literary Award. With the 1 lakh rupees, the was printed by Neelam Cultural Center in. Now let's come to the economics part and the finance part. IIM Ahmedabad has established first overseas campus in Dubai, following the UAE MOU between with the UAE government. New Pamban Bridge, very important, and that was Pamban Bridge was inaugurated in Tamil Nadu, first vertical lift sea bridge, showcasing the nation's growing engineering and infrastructure capabilities. 2.07-kilometer long bridge spanning the Park State stands as a testament to the India's engineering prowess and visionary infrastructure. Constructed by Rail Vikas Nigam Limited, and that's a Navratna PSU. India's first deep water transshipment port, very, very important, Vizinjam in Kerala, in making India a global shipping hub and lowering logistic cost. Built at a cost of 900 crore public private mode, the transshipment port is operated by Adani Group, with the Kerala government holding the majority stake. Deep water transshipment port. 2024-25
Tamil Nadu recorded the highest real economic growth rate in India. डालना जी. चले आगे. चलिए. highest real economic growth rate in history. India is considering this is important 49% FDI, foreign direct investment, in its nuclear energy sector. Initial approval could be 26%, followed by a review. Right. This move aims to boost nuclear energy production up to 40 gigawatt by 2035. Amendment to Atomic Energy Act are expected. 100 gigawatt goal है. एफडीआई न्यूक्लियर एनर्जी का बारे बात की जा रही है जी. तो 26% देने की. और टारगेट है कि 2025-35 तक हम 40 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नहीं. Periodic labor force survey. India's unemployment rate for 15 plus age group slightly decreased from 5% to 4.9%. Modest improvement in employment opportunities, with rural unemployment dropping to 4.2%, urban female unemployment from 8.9% to 8.3%. ये unemployment के बारे में है सच. Ministry of Ports, Shipping and Waterways has flagged up cruise operations from Mumbai International Cruise Terminal in Mumbai, India's largest world-class cruise terminal. The newly inaugurated MICT is designed to handle 1 million passengers every year, with approximately 10,000 passengers per day. तो ये था जी. अभी हमने करंट अफेयर्स पकड़े रिपोर्ट्स पे. अब जरा इन्वायरमेंट एस्पेक्ट. चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी has approved a translocation of cheetahs from Kuno National Park, that is in Madhya Pradesh, to Gandhi Sagar. और ये जो कमेटी established by National Tiger Conservation Authority of Project Cheetah in launched in 2022 began with the translocation of 8 cheetahs from Namibia and 12 from South Africa to Madhya Pradesh Kuno. Kazakhstan has uncovered its largest ever reserve of rare earth metals in Kurikatri site in Korgandan region. Nearly 1 million ton of rare earth elements and potential reserves exceeding 20 million tons in the broader Zana Kazakhstan zone. Now, Kazakhstan will be a major player in the critical mineral sector. This discovery could boost green technology and reduce dependence on dominant suppliers like China. UNHRC has adopted a resolution recognizing the critical connection between plastic pollution, ocean protection, and the right to a clean, healthy, and sustainable environment for every first time.
The Human Rights Council recognition and UN General Assembly resolution affirming right to a healthy environment. Tiger Outside Tiger Reserve project is finalized by Ministry of Environment, Protection, Forest and Climate Change. Will oversee the project aims at to better manage the 30% of the estimated 3682 tigers of India's tiger population living outside designated areas to be implemented in 10 states initially. Create tiger outside tiger reserves. ये प्रोजेक्ट है, क्लियर है। और इस प्रोजेक्ट को देखेगा कौन? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 30% of estimated India's tigers by outside designated reserves. अब बात करते हैं, आर्कटिक हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट due to climate change, resource competition, strategic rivalries among major powers. This is the most fragile and northernmost area of the planet. Parts of Canada, Russia, Greenland, Norway, Sweden, Finland, Iceland, and then US is warming at nearly 4 times the global average, causing economic and environmental shifts from the influence. The Northwest Passage becoming viable alternative. क्लियर हो गया ये? I hope everybody is clear. याद रखे आर्कटिक के ऊपर। Recently, International Big Cat Alliance signed an official agreement with the Government of India, formally establishing India as the headquarters and secretariat of the alliance. This was launched by Prime Minister Modi in 2023, 50th anniversary of Project Tiger, right? Implemented through National Tiger Conservation Authority, is to conserve seven major cat across the world: tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, and the cheetah. ये है इंटरनेशनल कैट अलायंस। Odisha government is Simlipal Tiger Reserve, world's only home to wild melanistic tigers. A national park spanning an area and is second in the eastern state after Bhitarkanika. Clearly, world's only home to wild melanistic tigers. Dozens of mini earthquakes have rattled Mount Spur recently. Fears among the scientists that volcano may be on the verge of major eruption, and it is an ice and snow-covered active stratovolcano complex in Alaska range. The demoic acid produced by certain algae blooms is causing crisis for Californian sea lions, impacting their nervous system and potentially leading to aggression, disorientation, seizures. The toxin which enters the food chain through small fish is causing thousands of sea lions to wash offshore sick and disoriented. ये भी important है. Next, boosting tourism and wildlife conservation. Punjab government has announced plans to develop Nangal as a destination, tourist destination. Turn Anandpur Sahib's Jhajjar Bachauli Wildlife Sanctuary into first leopard safari destination. ये थे जी हमारे स्टेट से न्यूज़, और अगला जी इंटरनेशनल न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट सी क्योर, ये जो है यूके बेस्ड
pilot project focused on extracting carbon dioxide directly from seawater. So that is Project Secure, to explore whether this method could be scalable and cost effective to reduce atmospheric carbon dioxide. Is based in Weymouth, England, funded by the UK government. क्लियर है जी, डायरेक्टली फ्रॉम द सी वाटर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट है जी ऑपरेशन ब्रह्मा of Myanmar amid earthquake tragedy. The government of India has launched Operation Burma initiative to provide immediate relief and assistance to affected regions. Very important. Operation Brahma. Morocco has launched a project called Water Highway. पूछ सकता किस कंट्री ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, to ensure a stable drinking water supply for major cities. Transfers excess water from Cebu rivers to Rabat and Casablanca. It helps alleviate the effects of climate change and prolonged droughts. Morocco has been experiencing a severe water crisis primarily due to the ongoing 6 year drought. Ottawa Treaty is officially known as Convention on Prohibition of Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their destruction. याद रखिए Ottawa Treaty. Agreement that bans the use, production, stockpiling of anti-personnel landmines to prevent civilian casualties and address the long-term impact of landmines after conflicts. Obligates the signatory to destroy their stockpiles within 4 years, clear mined areas, and assess the victories. US, Russia, and India are not the party to it. Estonia's president Alar Kales signed a constitutional amendment that prohibits non-EU citizens from participating in local elections. This law move targeted large Russian minority in the Baltic region. European Union naval force under Operation Atalanta has proposed a joint naval exercise with Indian Navy to enhance coordination and maritime cooperation between European naval forces and the Indian Navy. Drill will go beyond the usual passage exercise and will include the advanced tactical maneuvers. World's first 3D printed railway station. The station was built in under 6 hours by assembling refabricating components that were 3D printed some elsewhere. Project placed an old wooden structure and demonstrates the potential of 3D printing in railway infrastructure. Israel, ये याद रखिएगा जी, has taken over a security corridor known as Morag Axis. This area consists mainly of agricultural land and located between the Khan Yunis and Rafah in the Gaza Strip. The name Morag refers to an illegal Israeli settlement that was established in the Taiga region. Important है जी, ये भी याद रखेंगे. Aim for Nature initiative launched by FAO, very important, to improve the monitoring and reporting of the ecosystem restoration efforts. Focused on restoring at least 30% of degraded ecosystem globally by 2030, aligning with global biodiversity framework. And this is funded by UK as a part of the FAO's larger aim for forest. क्लियर है जी, कहीं भी आपको फूड एंड एग्रीकल्चर में आएगा नहीं, पर इसमें है ये उन उसका ही ये प्रोग्राम. क्लॉस श्वाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर,
stepped down as chairman after leading the organization for nearly 5 decades. Former Nestle CEO Peter Bragbeck Ledmaith has been appointed as internal chairman while a search for Schwab's successor begins. General Bryce Oligoinugoma is the new president of Yemen. WHO finalized a pandemic TT proposal to be presented for consideration at 78th World Health Organization. This TT aims to strengthen global pandemic prevention and preparedness and response. The finalized draft, built by the Intergovernmental Negotiating Body, will be presented to World Health Assembly for a benign final decision. Bangladesh ने अभी 54th nation to sign Artemis Accord, principles guiding responsible space exploration. Promote peaceful cooperation, cooperative civil exploration of outer space. UAE, presented by the Ministry of Interior, has been launched to chair the Committee on Governance, a key advisory committee of Interpol. Chinese scientists have developed tested a non-nuclear hydrogen bomb, pushed towards cleaner energy solutions. The move comes amid the US increasing defense support to Taiwan, China's quest for dominance in the South China Sea. The explosive device, weighing 2 kilograms, was developed by the China state. Pen Plus strategy, a regional approach to enhance access to diagnosis, treatment, and care for severe non-communicable diseases in Africa. Upon the WHO pen, like package of essential non-communicable disease interventions. Devastate हमने कई बारी geography में पढ़ा which is between Greenland and Canada, right? Pro micronutrient is a newly discovered submerged landmass beneath the icy water of the Devastate. This ancient landmass was, which formed during the Paleozoic era, is a fragment of continental crust that was once part of the larger landmass before breaking. आपको ये याद रखना डेविस्टेट के बारे इलेक्ट्रोजेट जीमेन इमेजिंग एक्सप्लोरर it aims to study auroral electoral projects intense electric currents flowing in the earth's upper atmosphere. तो ये भी याद रखना जी इलेक्ट्रोजेट जीमान इमेजिंग प्रोसेस फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन द पर्म equipped with zircon humanium hypersonic missiles, a move that significantly boosts its naval capabilities. The Perm Ayasam class submarine is slated to join the Pacific Fleet and will replace the Akula and Oscar class. India and Italy have decided to expand cooperation in the areas of trade, clean energy, high technology while agreeing to work jointly implementing ambitious India Middle East Europe corridor to connect India with Europe through Middle East via multi-modal projects. GP Drashti, drone response, aerial surveillance, tactical intervention. Clear was launched by Gujarat Police, utilizes drones for real-time monitoring and aiding in rapid response to incidents. To enhance traditional policing methods by enhancing faster response and more efficient policing. India and Sri Lanka signed a landmark defense cooperation pact, their first more formal military agreement. During Modi's visit to Colombo, the two nations also agreed on developing Tri Comeli as a regional
energy hub and launched the Sampur solar power project. उतुरुंची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रेटो वॉल्केनो जो कि एंडीज में अभी अभी निकला इन ओलिविया. It is known as zombie. Uturunchu is called as zombie. Nickname is due to its discontent but non-eruptive eruptive activity. The volcano's zombie-like behavior is attributed to the movement of magma fluids gases beneath. Daniel Nabova, Ecuador's president, after gaining a victory over the left-wing Lucia Gonzalez. तो ये थे मेरे भाई, हमने करंट अफेयर्स अभी कवर किए. अब पढ़ेंगे इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर. गांड फट गई, गांड फट गई. तो चलिए फिर दोस्तों, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पकड़ते हैं. इन पर आजकल ज्यादातर यूपीएससी का नजर है कि भाई करंट अफेयर्स फ्रॉम साइंस एंड टेक, इसरो ने क्या किया, इन्वायरमेंटली क्या चीजें चल रही हैं, और वर्ल्ड वाइड नासा के साथ क्या हो रहा है, ये चीज है. यहाँ पर है बायोमास मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया फ्रॉम फ्रेंच गुयाना अबाउट द वेगा सी रॉक. P-band radar to monitor global forest and measure carbon levels, to understand the role of forest in the carbon cycle and inform conservation efforts. Primary goal is to generate the first ever global measurement of forest biomass. ये फोकस है जी बायोमास मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है. और जरा चेक करिएगा फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है. दैट इज इन साउथ अमेरिका, राइट. यूरोप, और उसका स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना में. नेक्स्ट बात करते हैं. आप सभी मेरे साथ पढ़ चुके हैं कई बारी ज्योग्राफी में. recent studies confirm iron within the sun is more opaque than the previously predicted by solar models. क्लियर है जी. जो आयरन है सन के अंदर, वो मोर ओपेक है देन प्रेडिक्टेड बाय सोलर मॉडल्स. means iron absorbs more light than anticipated, affecting high energy moves from the sun's core to its surface. Helioseismic studies reported that the seismic opacity is 10% higher than the theoretical values around 2 million. Next, very very important, India's Chandrayaan 3 mission, जिसका नाम है चास्ट और चेस्ट, Chandra's surface thermophysical experiment, became the first ever instrument to successfully measure subsurface temperature near the moon's south pole. क्लियर है जी. सब सरफेस टेम्परेचर मून के साउथ पोल के पास. was deployed by Vikram lander after Chandrayaan 3's successful lunar landing in this month. The data suggested that the presence of more water ice near the south pole than previously estimated for future lunar missions. ये भी याद रखिएगा जी. चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये है कि इंस्ट्रूमेंट टू सक्सेसफुली मेजर सब सरफेस टेम्परेचर मून के साउथ पोल के पास. और ये चेस्ट डिप्लॉय किसने किया था, विक्रम लैंडर ने. क्लियर है. नेक्स्ट है जी, थ्री गॉर्जेस एंटार्क्टिक आई. इट इज 3.2 मीटर रेडियो वेव telescope located at China's Zhongshan station in Antarctic.
It is developed by China, Three Gorges University. थ्री गॉर्जेस डैम भी हम सुना हुआ होगा आपने, ब्रह्मपुत्रा पे चाइना बनाया था। शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी। सो ये थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई बनाई है जी। क्लियर है। टेलीस्कोप है ये चाइना का। To study invisible light, specifically radio and millimeter waves, to understand cosmic phenomena like star formation, gas movement. Unique ability to work with both radio and millimeter waves provides a more comprehensive view of space. Next, IAG ISRO achieved a milestone with controlled re-entry of the PSLV orbital experiment module into Earth's atmosphere. ISRO's commitment to the debris-free space mission for managing space debris, right, as the space docking experiment mission, SpaceX, served as the upper stage of the PSLV C-60. याद रखिएगा जी, इसरो ने अभी अभी अचीव किया माइलस्टोन विद द कंट्रोल्ड री एंट्री, वापस किसकी, पीएसएलवी ऑर्बिटल मॉड्यूल की, इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, क्लियर डेब्रीज फ्री मिशन के तहत हम जो अपने लॉन्च करेंगे सैटेलाइट व्हीकल्स वो वापस भी आएंगे नहीं। क्लियर है, दैट इज द होल थिंग। और ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है स्पेस टेक्स। नेक्स्ट, हंसा NG aircraft is a two-seater, low-wing, indigenously designed and trainer aircraft by CSIR, designed to meet the needs of flying clubs, training schools. Digital glass cockpit, a bubble canopy, and electrically operated flaps. Is powered by a fuel-efficient Rotex 912 ISC 3 sports engine to provide a cost-effective alternative to foreign trainer aircraft and training pilots for private pilot license. Next is very important, Pioneer 11 robotic space probe, जिसने स्टडी क्या किया जुपिटर और सैटर्न। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैटर्न एंड डिस्कवर इट्स एफ रिंग, लॉन्च बाय नासा। पायनियर, ये भी याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है पायनियर 11 जुपिटर और सैटर्न की स्टडी करने के लिए। Biotechnology company in US named Colossal Biosciences announced that it had resurrected dire wolf, a large predator that went extinct more than 12,000 years ago. DNA from ancient dire wolf and used the CRISPR gene editing to modify the DNA of grey wolves, the dire wolf's closest living relative. Not true dire wolves, they are genetically modified grey wolves with some dire wolf features. क्लियर है जी, इन्होंने एक खुद का बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जी डायर वुल्फ, जो ऑलरेडी काफी टाइम से 12,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये इन्होंने किया क्या, डीएनए जो पुराने फॉसिल से उससे उठा के देन यूज क्रिस्पर जीन एडिटिंग टू मॉडिफाई द डीएनए। क्लियर है जी। ग्रे वुल्फ को उन्होंने उसमें, दीज पप्स आर इंप्रेसिव, दे नॉट ट्रू डायर वुल्फ्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। नेक्स्ट वन, चाइना और रशिया ने प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून टू पावर द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। माशाल्लाह, ये लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, वहां पर जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। इधर हम खुद का नहीं लगा रहे, ये बाहर दूसरे प्लेनेट पे लगा रहे हैं। This project aims to provide energy for long-term lunar exploration. Memorandum of cooperation between the Russia's Roscosmos and चाइना CNS से, याद रखिएगा, ये भी अद्भुत चीज है। नासा का पहला स्पेस बेस्ड क्वांटम ग्रेविटी सेंसर, दैट इज क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, टू मैप अर्थ's subtle gravitational shifts from space, developed by NASA's Jet Propulsion Laboratory. This instrument will use ultra cold rubidium atoms to measure variations in Earth's gravity, enabling more accurate mapping of underground features like water reserves, these things.
Next, Xiaozhou 20 mission, crewed space flight mission by China, sending three astronauts to the Tiangong space station, aimed to maintain a continuous crew presence in space. Next, NASA's Lucy spacecraft successfully flew past the asteroid Dongjel Sun and key practice run for 12-year mission. I hope everybody is clear. Next बात करते हैं जी Voyager tardigrades which is led by ISRO. अभी अभी आपको सभी को सुना भी हुआ एक्सियम 4 मिशन के तहत हमारे इंडिया के एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर whose name is Shubhanshu Shukla. He'll be joining as a part of Axiom 4 mission. तो उसमें इसरो का वॉयजर टारडिगर्स ग्रेड्स भेजे जाएंगे वहां पर. This marks the India's first human experiment in microgravity to study the revival, survival, and reproduction of these hardy creatures in a microgravity environment. याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है. टार्डिग्रेड्स को लेके जा रहे हैं वहां पे. नेक्स्ट, ISRO has successfully developed and tested an indigenously satellite nozzle diversion for PSLV's fourth stage, replacing the previously imported Colombian material. Clearly, and thus indigenous stellite nozzle is projected to reduce import cost by 90%. इसरो ने खुद का बनाया इन महेंद्रगिरी टेस्ट हॉट टेस्ट lasting 665 seconds and successfully qualified the satellite nozzle. Do remember this diversion for PSL. First of its kind, a quantum key distribution over a 4 crore multi core fiber. The collaboration between CDOT and Stellite technologies. A leap in quantum communication and secure communication networks allows for simultaneous transmission of QKD and classical data for the over the same fiber. Next, the Indian Institute of Spices and Research. A new turmeric variety named IISR Surya is designed specifically for the masala and powdering industry. Addresses the growing demand for light colored turmeric, which has been challenging for farmers to produce. So these were the current affairs for the part of your science and tech. Let's see the sports current affairs. World Boxing Cup Brazil में हुआ 2025. Indian contingent bagged 6 medals, including a gold and silver at this cup. And this cup was held in Fosdo, Igaku. Hitesh Gulia became the first boxer to clinch a gold medal in the World Boxing Cup. Do remember Hitesh Gulia name, right? Then Odell Cabra of England was injured and couldn't take to the ring. Abhinash Jabwal, the other boxer to reach the final in the 65 kg category, gave his best against the local Yuri Reyes but had to settle for a silver. तो यहाँ पर नाम हितेश गुलिया तो पक्का याद रखें. बाकी भूलते हैं तो भूल जाए, कोई चक्कर नहीं. अविनाश जम्वाल फाइनल 65 कैटेगरी. और ये हुआ कहाँ पे वर्ल्ड कप बॉक्सिंग का? ब्राजील पे. क्लियर है. जादूमणि सिंह मंदेंगम, उसके बाद मनीष राठौर, सचिन विशाल, ये ब्रॉन्ज जीते हैं. पर ये सारे नाम आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये हितेश गुलिया याद रखना है. ग्रैंड प्रिक्स ऑफ अमेरिका, फ्रांसिस्को बगनिया seizes momentum victory at the Red Bull Grand Prix of the Americas after pole sitter Mark Marquez crashes out for the lead in the spectacular fashion. कुछ नहीं था इसमें important. Legend Vandana Kataria retires at the peak of her career after 15 years. 320 international appearances. Her retirement marks the end of an era for Indian hockey with her 320 international caps and 158 goals. Vandana Kataria. Remember this name, very important. कि कौन सी गेम से है? From hockey. Saudi Arabian Grand Prix 2025. Oscar Pistiatri
Saudi Arabian Grand Prix, outperforming Max Verstappen. Bahrain Grand Prix, Oscar Piastri claimed a commanding lights. Bahrain Grand Prix to clinch his second win. Japanese में Max Verstappen again won this Grand Prix. Rolex Monte Carlo Masters 2025, कार्लोस अल्करास वॉन इस मोंटे कार्लो। ये भाई इतने आपको पहले ही बता दूं, ग्रैंड प्रिक्स पे ज़्यादा फोकस मत करें, यूपीएससी ने ज़्यादातर पूछे नहीं है कभी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में अमन जॉर्डन मनीषा भानवाला won the gold medal in 16 women's 62 kg category. Antim Pangal settled for bronze. Deepak Puniya and Udit settled for silver. Again, not very important. This is important. International Shooting Sports Federation World Cup was held in Buenos Aires, which is the capital of Argentina. 4 gold, 2 silver और 2 bronze. India finished second on the ISS World Cup, right? And fifth core, Samra. Women's 50-meter rifle, 3 positions. Rudraksh Patil, Suruchi Singh, Vijayveer Sidhu accounted for India's gold medals at the first ISF World Cup. Manu Bakar, who won 2 bronze medals at the Paris 2024. Miami Open title, world number on Arena Sabalenka, secured her first Miami Open title by defeating American Jessica Pegula. This victory marks Sabalenka's second title of 2025. So do remember this one. Khelo India Youth Games, which are held in Bihar, 27 medal disciplines and one demonstration sport. The first multi-discipline sporting event was hosted by Bihar. Clear across the 5 cities like Patna, Rajgir, Bhagalpur, Gaya, and Begusaraי. Clear first time at the KIYG, Khelo India Youth Games. Spake Takra has been included as a medal sport, and esports will be demonstration event. Sepak Takra. Khelo India aims to achieve twin objective of mass participation and promotion of excellence in sports. Next है जी Indian Super League 2024-2025. Mohan Bagan Super Giant clinched the Indian Super League victory over Bengaluru FC at the Vivekananda Yuba Bharati Pringam Stadium. This was Mohan Bagan's second ISL title, following the three that made in triumph in the 2022-2023 season. Next is the Wisden Cricketers Almanac 2025, जिसमें include हुए जसप्रीत बुमराह and Smriti Mandhana. Very important for your NDA, CDS, CAPF paper. Leading cricketers of the year for exceptional performances. अब बढ़ते हैं जी पर्सनल न्यूज जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहले तो दोस्त जो न्यूज में है, फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन क्लियर है जी। यहाँ पर अगर आप चेक करो, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन पास्ड अवे इन बेंगलुरु after 84 years of age, served as ISRO chairman from 1994 to 2003. Member of National Education Policy, his contributions were recognized through various. तो याद रखिए कस्तूरी रंजन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इसरो के चेयरमैन रहे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इनका काफ़ी भाग था, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब जीते हुए हैं। अब ये भी नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बने थे। उसके बाद मई में आपको पता होगा नए और भी बन चुके। क्लियर है, रिकमेंडेड ये बने अब भूषण रामकृष्ण गवई, 52nd Chief Justice. He is the second senior most judge of the Supreme Court, and his name has been recommended to the Union Law Ministry. He was born in Amravati, नागपुर बेंच में उन्होंने काम किया, ये नहीं अपने को पता, but he is the second Dalit Chief Justice. बड़े आगे जी।
चलिए आगे देखते हैं। रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी, इनको 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। पर पूछा ये नहीं गया आपके पेपर में, टर्म 3 साल होती है। जो लॉ कमिश्नर नॉन स्टिट्यूटरी बॉडी है, क्लियर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। MC Steerboard was the chairman of the first law commission of India। क्लियर हो गया जी, ये याद रखिएगा। रिचर्ड चैम्बरलिन, iconic television and film actor, best known for his role in Dr. Kildare, and his reign as the king of the ministries, has passed away in Waimea, Hawaii. Pope Francis, first Latin American and Jesuit Pope, died on April 21, at the age of 88, with following a stroke and the heart failure from battling double pneumonia. He was 266th Pope, first from South America. Pope Francis. South America Supreme Court Collegium has recommended appointment of Arun Palli, a judge in the Punjab and Haryana Court, as the Chief Justice of J&K and Ladakh High Court. Ajay Bhushan Prasad Pandey, Finance Secretary of India and ex-Chief of National Financial Reporting Authority, Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank. Mario Vargas Llosa, Peruvian novelist, essayist, and journalist, passed away on April. He was a prolific author and essayist with such celebrated The Time of the Hero, The Greenhouse. Kumudini Lakhia, often hailed as a India's own Maratha Graham, rewrote the language of Kathak, passed away at her residence. Lakhia was conferred with the Padma Vibhushan, second highest civilian in this thing. तो ये भी याद रखिए, कौन थी कुमुदी लखिया? कथक डांसर थी, कोरियोग्राफर। राम सहाय पांडे, डांस आर्टिस्ट, इनकी भी अभी अभी डेथ हुई, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता कोई भी इनका रीसेंट डेथ हुई हो, एंड ही वाज अ वेरी prominent personality in the national. Next, RBI appointed Poonam Gupta, a World Bank economist, as deputy governor. Siva Subramaniam Raman, 1991 IAS officer, was appointed as chairperson of Pension Fund Regulatory Development Authority. National Payments Corporation of India appointed Sohini Rajola as executive director, growth as part of the Apex Payments leadership. Let's check out the places and news जो submits हुए हैं. Very important, very very important. Ahead of Basel, Rotterdam and Stockholm conventions, इनका इकट्ठा हुआ BRS COP बना दिया गया in Geneva. Indian civil society group have urged the government to impose a complete ban on chlorpyrifos, a pesticide banned in over 40 countries, still used in India. Is organophosphate insecticide, a caricide and a miticide. It is used to control soil-borne and foliage-feeding insects like cotton, paddy, soy, wheat, and maize. So reduce IQ and development delays. India has been elected by acclamation as the member of UN Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting. ISAR functions under the UN Conference on Trade and Development. It works to improve the global accounting standards and promote transparent corporate disclosures, provides policy advice and technical support to improve the quality and comparability of financial reporting. India's selection highlights its efforts in strengthening corporate governance and financial accountability. Clear है जी ये? Next is the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and this held in Rome, is facing controversy for over
proposed amendments that could dilute its benefit sharing provisions. 35 food crops and 29 forage plants are covered under the treaty's multilateral system. The proposed change would remove these limits and allowing all plant and species to be transferred. बीजिंग डिक्लेरेशन किसी टाइम पे आईएएस में भी आ चुका है। ये है क्या, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, global agenda adopted by 1995 by 189 countries to bring gender equality and empower women and the girls. So बीजिंग डिक्लेरेशन याद रखिएगा जी, एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पूछ सकता है ये किस चीज़ के रिलेटेड है। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, एंड जेंडर इक्वालिटी. Baku to Belem roadmap to 1.3T. It's again a new, very important UNA to scale up climate finance for developing countries, aiming to mobilize $1.3 trillion per year by 2035. Baku to Belem roadmap because it begins in Baku and concludes at COP30 Belem. Very, very important in Brazil in November 2025. जो COP30 है वो बेलम में होने जा रहा है, कहाँ पर, वहां पर. और 1.3T का मतलब कि 1.3 ट्रिलियन dollars will be funded to the developing countries by 2035 to support low greenhouse gas emissions and climate resilient development pathways. Sixth BIMSTEC summit, right? BIMSTEC Bay of Bengal initiative for multi-sectoral economic, technical and economic cooperation. थाईलैंड में हुआ, थीम था बिम्स्टेक प्रॉस्परस resilient and open. India led initiatives towards institutional and capacity building in BIMSTEC. A new program for skilling the youth, Bodhi, BIMSTEC, for organized development of human resource infrastructure. Training and scholarships will be provided for professional students, researchers, diplomats, and etc. Calling for greater regional economic integration. BIMSTEC Chamber of Commerce Business Summit every year. Athletics meet this year and the first BIMSTEC Games in 2027 when the group celebrates its 30th anniversary. तो बिम्स्टेक काफ़ी न्यूज़ में भी है भाई, इसके बारे सारा हिस्टोरिकल आस्पेक्ट भी हमें समझना है. क्लियर है. इसके मेंबर नेशंस भी अगर आप चेक करो तो दोस्त कौन कौन से ये भी चेक करना है. टुडे इंटरनेशनल कनक्लेव टाइटल बुद्धा धाम एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया will be held in Namsai, Arunachal. The International Buddhist Confederation, in collaboration with the Ministry of Culture, is organizing the event to explore the significance of Buddhist traditions in the region. Climate Change Council, very important. Brazil has proposed the creation of a new international body to accelerate global climate action. UN Climate Conference, कहाँ पर, बेलम में. हमने बात पहले भी की है, कॉप जो है बेलम में हो रहा है जो कि ब्राज़ील में है. Clear. November 2020 suggests forming a climate change council under the UN Framework Convention on Climate Change to fast track decisions made at COP meetings, better coordinate international efforts, and make climate action more effective. Remains informal for now, but it is expected to be a major topic at COP30. Again, I remember COP30 is going to be held in Belem in 2025 November. IDF World Diabetes Congress, WHO and International Diabetes Federation, a hybrid fest site, IDF World Diabetes, theme bridging gaps, integrated strategies to address the TB and diabetes. National Conference on Environment 2025, organized by NGT. The meet will have 4 key technical sessions that will address the session, the pressing challenges faced by the government. 11th BRICS Environment Meeting at the 11th in Brasilia, called for stronger climate cooperation, emphasizing from the Baku to Belem roadmap, US delay 1.3 day. 9th Global Technological Summit will be held from 10 to 12 April in New Delhi, Ministry of External Affairs and Carnegie, India.
Sambhavna, focusing on inclusive growth, digital governance, and international tech. Triple elimination initiative, very important. Triple initiative, eradicating mother to child transmission of HIV, syphilis, hepatitis B by 2026. याद रखिएगा कौन कौन से तीन है, HIV, syphilis मैंने पहली बार बीमारी सुनी है, उसके बाद hepatitis B, to improve maternal and child health outcomes by addressing these three diseases. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है. लखपति बेडियो by the Assam government is to empower women entrepreneurs through financial support and training. 40 lakh women self-help groups numbers will get financial assistance of 35,000 for 3 years to enhance women's financial independence and promote rural entrepreneurship. Tamil Nadu Legislative Assembly adopted a resolution. Union government to immediately review the Indo-Sri Lankan Agreement 1974. Take steps to retrieve Kachativu Island and located in Park Bay. The CM reiterated Kachativu Island is only permanent solution to protect the traditional fishing rights of Tamil Nadu fishermen and mitigate sufferings faced by them due to the Sri Lankan Navy. तो ये भी याद रखिएगा कच्चा तीवू वाला चक्कर इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट ऑफ 1974. Chhattisgarh State Power Generation Company Limited is establishing its first supercritical thermal power project in Korba district, part of expansion of the existing project and is being developed by EPC contract awarded at BHEL. CP Radhakrishnan inaugurated 62nd Maritime Day and the Merchant Navy Week at Raj Bhavan. Maharashtra State Wildlife Board approved the declaration of DPS Flamingo Lake as conservation reserve, making it the first wetland connected to the Thane Creek Flamingo Sanctuary. The decision follows years of campaigning by organizations like Net Connect Foundation, Navi Mumbai Environment Preservation Society. GP Drashti. It's a drone response and aerial surveillance tactical interventions launched by Gujarat Police. It will utilize the drones for real-time monitoring and aiding in rapid response and incidents, providing aerial visibility to complement traditional policing methods by enabling faster response. तमिलनाडु और केरला याद रखें ये दोनों स्टेट जॉइंटली कंडक्ट कर रही हैं सेंसस फॉर दिस नीलगिरी तार 50 years of Iraviकुलम National Park is only mountain ungulate endemic to southern India. Very very important. Ungulate स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, रेड लिस्ट में आता है endangered species में. माउंटेन ग्रास शोला फॉरेस्ट आपको सभी को सुना ही हुआ. इस बारी एनडीए में बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया, शोला फॉरेस्ट किन किन स्टेट्स में. मेरे को लगता था सिर्फ नीलगिरीज में और नीलगिरीज में भी अपर ग्रासलैंड में, लेकिन स्टेटें कौन कौन सी ये पूछा गया. तमिलनाडु और केरला तो पक्की होंगी, उसके अलावा भी है कोई तो कमेंट सेक्शन में बताइए. क्लियर है जी. पंजाब गवर्नमेंट हैज बैंड हाइब्रिड पैडी सीड्स including PUSA 44 to address the state's groundwater crisis, mitigate the environment damage, to reduce water consumption by promoting shorter duration, water efficient paddy varieties, and to reduce cost associated with hybrid seeds. Will jointly, ये तो हमने नीलगिरी तार वाला सुन ही लिया जी. पंजाब गवर्नमेंट हैज बैंड वैरायटी भी हमने पढ़ लिया. तेलंगाना notified the implementation of Telangana Scheduled Caste Act 2025. First state in India to operationalize the subcategorization of scheduled caste. SC reservation Telangana by subcategory based on socio-economic and education backwards. Telangana has declared heat waves, sunstrokes, and sunburns as state-specific disaster.
Allow victim families to receive an ex gratia compensation of 4 lakh per deceased person. Mahagenco, Maharashtra State Power Generation Company, and Rosatom have signed a MOU to jointly develop a thorium-based small modular reactor. Maharashtra becomes the first state to enter nuclear space. Thorium-based SMRs utilize thorium-232, a fertile material, to generate uranium-233 through transmutations. Tamil Nadu forests have conducted a survey to map the population of mugger crocodiles. Right, set up crocodile conservation center at Anaikarai at Kolinam River. The mugger crocodile is a medium-sized, broad-snouted crocodile, also known as marsh crocodile, primarily found in the fresh rivers. It's a red list IUCN, vulnerable category. Tamil Nadu government has set up a committee headed by former Supreme Court Judge Curran Joseph on to review center regulations. वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमारे पास दो कमेटीज बन चुकी हैं इतिहास में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है सरकारिया कमीशन पुंची कमीशन अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक और बनाई है जिसका नाम है कुरियन जोसेफ कमेटी अबाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी review of the previous commissions, review of the past commissions, safeguarding federal principles, timeline, and restoration of state power. Tamil Nadu space industrial policy, right? This comes along the Gujarat space tech policy for 2530. Policy to position the state as a leader in space innovation and high value manufacturing, while Gujarat becomes the first state of India with a dedicated space sector policy. Andhra Pradesh capital Amravati to become world's first city powered entirely by renewable energy. Very important. Plans to generate 2700 megawatt of electricity through solar, wind and hydropower. Mandatory rooftop panels for government buildings and electric buses and metro systems. Maharashtra has launched Pink e-rickshaw initiative to empower women economically and socially, promoting eco-friendly transport. Deputy Chief Minister Ajit Pawar successful pilot in Pune and is expanding across the state by providing electric access to women and especially those from vulnerable backgrounds, offering them a sustainable livelihood. Andhra government India's first quantum computing village in Amravati, chaired by real-time governance society. Top technology players IBM, TCS, and L&T came together to shape the roadmap for this pioneer project. The proposal facility aims to be a world-class hub for quantum computing research, development and innovation, marking India's strategic commitment to become a global leader in advanced computations. Haryana Chief Minister, 10% hike in reservation for Agniveers in state police jobs. The total reservation for Agniveers to 20%. First state in country to secure the future of Agniveer by reserving jobs for them. Haryana government has declared two sites of over 4400-year-old Harappan civilization in Bhiwani, protected monuments and archaeological sites. Right, in Tigrana and Mitatham has issued the notification under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites. Meghalaya was recognized by UIDAI, the best performing state in two categories: mandatory biometric updates of the children and verification of adult Aadhaar. Now let's cover up the miscellaneous part जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं जैसे यहां पर है जीआई टैग अभी अभी कुंभा कॉनल बेटल लीफ कहाँ की थंजावर की और थोबालाई फ्लावर गार्लैंड फ्रॉम कन्याकुमारी इनको जीआई टैग दिया गया
इससे अब तमिलनाडु के 62 हो गए हैं जीआई टैग्स। कुंभा कोणमल बेटर लीव किया था थोवलाई फ्लावर, दोनों तमिलनाडु से। 15th century copper plates in Bangalore related to reign of Devarya I of Sangam dynasty into Vijayanagar Empire dated to 1406 CE. The land grant to Brahmins and confirmed Devarya I coronation date. These plates are inscribed in Sanskrit, Kannada, and Nagari scripts. Feature of Vaman seal instead of the traditional Varaha emblem. Telangana's Varangal Chapata chili, that is tomato chili, is unique for its bright red color and rounded tomato-like shape. इसको भी जीआई टैग मिला वारंगल, एनआईटी वारंगल मेरे को याद है तेलंगाना में 18th प्रोडक्ट है जो तेलंगाना से जिसको मिला। न्यू इंस्क्रिप्शन pertaining to Raj Raja Chola who was discovered in Somagri Hills at Malavaram Valu, Melu in Madurai. Begins with the honorific title Raja of Madurika, a unique salutation found in the region. Kannada Pia has been granted GI tag. ये कहाँ से? कर्नाटका से है कि केरला से? केरला से। और बंदा कन्नड़ से होता है, कर्नाटका में तो केरला से भी कन्नड़ से होगा, लेकिन ये हेयर क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट है बाय उराली मानन मलयालम and Kada tribal communities. The product derives its name, which literally means mirror mat. Prime Minister Modi recently visited Jaya Shri Mahabodhi Temple at historic city of Anuradhapura during a trip to Sri Lanka. Oldest living cultivated plant in the world, Bodhi, people in Hindi, is believed to have grown from a branch of a tree in Bodh Gaya, under which Gautam Buddha attained his enlightenment. This branch was brought to Sri Lanka by Sangamitra, Mauryan Ashoka's daughter and Buddhist nun. Anuradhapura is a UNESCO World Heritage Site now. वहां पर मोदी जी गए हैं, which is UNESCO World Heritage Site, especially for Buddhist monks. वेस्ट बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स और अब डाल दिए गए हैं। नॉलेन गुड़ संदेश, क्लियर है? गुड़ संदेश, ये भी मिठाई है इनकी, बंगाली मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बनाई जा रहे हैं। और ये बारीपुरा गोवावा जो इनका अमरूद है उस पे। फिर उसके बाद कामरपुर वाइट बॉन्ड, मुर्शिदाबाद चना बोरा, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, and then Malda's Nistari silk yarn. Unique characteristics, traditional production methods, boosting their local economies. इनको भी GI टैग दे दिए। Supreme Court imposed a ban on blasting activities within a 5 kilometer of Chittorgarh Fort, which is a UNESCO World Heritage Site, to protect the fort from potential damage caused by explosions during mining operations, to assess the environmental impact and structural risk to the fort. Supreme Court of India clarified that the governors must act on state bills in a time-bound manner. Following the aid and advice of the Council of Ministers, Article 200, without independent discretion, Tamil Nadu governors referral of free enacted bills to President as erroneous in law. Supreme Court sets time frame for governors, saying the phrase as soon as possible with a sense of expediency. Governor has a maximum of 1 month to withhold the assent to the aid and advice of the state cabinet. Is given to return the bill with the message specifying the reasons. If the governor withholds the assent contrary to the cabinet's advice, the governor has 3 months to reserve a bill for president's consideration against advice.
must grant assent to a bill repassed by State Assembly under Article 200 with the maximum of 1 month. ये चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी क्लैरिफाई किया स्टेट बिल के केस में क्या होता है। जस्ट लाइक हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा विटो पावर की तरह ही एक चीज है ये, विद द गवर्नर कैसे करना पड़ेगा। सतलुज जल विद्युत निगम ने रिलीज किया 269.98 करोड़ एज लैंड कंपनसेशन फॉर 3097 मेगावाट इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन दिबांग वैली, boosting hydropower capacity in the northeast. सतलुज जल विद्युत निगम। manuscripts of Bhagavad Gita and Bharata Natya Shastra, 74 editions to UNESCO's Memory of the World Register for 2025. Recognizes important historical texts, manuscripts, documents that have influenced societies. Sarhul Festival, significant spring and new year celebration for Adivasi communities in Jharkhand and the Chota Nagpur region, is rooted in North nature worship, particularly the Sal tree. 14.57 kilometer Dev Prayag Janasu tunnel in Uttarakhand, part of the Rishikesh Karan Prayag rail link. A breakthrough on April 16 marks the completion of one tunnel with the second tunnel evacuation over. Due to Himalayan geology, including the risk of tunnel collapse, water ingress, and posing a risk of flooding and collapse, but the breakthrough was a major milestone. India's longest rail tunnel, as well as completed with the fastest speed. Pahalgam attack, massacre in the Valley, Besaran Valley in South Kashmir, in Pahalgam, right? Or ye in a major diplomatic fallout. India suspended the 1972 Shimla Agreement, closed the Wagah border, Indus Water Treaty, banned the Indian Airlines from its airspace. Saudagari block print, a traditional textile art form from Jamalpur, Ahmedabad. इसको भी मिला जीआई टैग। जीआई टैग की एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखिए जो अभी रिसेंट मिले हैं, पूरे तो आप याद करने से रहे ना होंगे, पर जो इन पिछले 3-4 महीनों में मिले हैं, स्पेशली इस महीने में आपने देखे कितने मिल गए हैं, इस पर क्वेश्चन आना ही आना। बनारस शहनाई, इसको जीआई टैग मिला। यूजर्स फॉर रिजाइडिंग इन द बनारस वाराणसी कैन यूज द नेम बनारसी। मनोज कुमार और भरत कुमार was recently passed away at the age of 87, heart related complication and decompensated liver cirrhosis. Was born in Abbottabad in northwestern Frontier province. Was named Hari Krishna Goswami. Mr. Kumar debuted in 1957. कांच की गुड़िया मूवी, ये सब है। बस इतना याद रखेगा, मिस्टर मनोज कुमार, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, पूरब और पश्चिम, काफी पुरानी मूवी है, जीरो दिया मेरे भारत ने। मुत्तायल गोविंदा शंकरा Narayana, a historian who was recently passed away, again very important, पौननी केरला में हुए थे। हिस्टोरियन है, इतना याद रखें क्या किया क्या नहीं। तो ये थे मेरे भाई हमारे पूरे हो गए करंट अफेयर्स, कौन से मंथ के, अप्रैल मंथ के। तो दोस्तों ये आपके किसी भी पेपर में, चाहे आपका सीडीएस का पेपर है, चाहे एनडीए का पेपर है, और चाहे ये जो पहले आ रहा है सीएपएफ, इसमें ये करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। वी आर अनाउंसिंग द न्यू बैचेस, ऑनलाइन बैचेस फ्रॉम ई तक्षशिला टीम। So thank you, Jai Hind, and stay tuned on this channel.